আজ আমরা শুনতে চলেছি পঞ্চমুখী হনুমান কবচ। পঞ্চমুখী হনুমান কবচ কোনো ভক্ত যদি ভক্তি ভরে 5 বারও শুনে নিন, তাহলে সেই ভক্তের সমস্ত ধরনের দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা, বিপদ, আপদ, সংকট দূর হবে। সর্বসুখ প্রাপ্তি করতে পারবেন, আর্থিক দিক দিয়ে, শারীরিক দিক দিয়ে, এবং বিশ্বাস করা হয় ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তাই ভক্তি ভরে শুনুন শ্রী শ্রী পঞ্চমুখী হনুমান কবচ। সঙ্গে জয় হনুমান চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যেতে ভুলবেন না। এমনই প্রত্যেক দিন হনুমানজির আধ্যাত্মিক ভিডিও সবার প্রথমে পেতে। জয় সীতারাম, জয় হনুমান। ओम श्री पंचमुख हनुमत कवचम। ओम श्री पंचवदनाय अंजनेयाय नमः। ओम श्री गरुरुवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शिनु सर्वांग सुंदरी यत कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनयुक्तं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अश्चैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाभूतम् अत्रुगतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गरुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल जररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवन्तकरं परं यनवक्त्रेण विपेन्द्र तारकाख्यं महाशूरं जघान शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परं ध्याता पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खटाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्ठौ तु कौमोदकी भिक्षं धारयन्तं कमण्डूलं भिन्दीपालं ज्ञानमुद्रं दशभ्रीमुनिपुङ्गवम् एतान्यौर्यजालानि धारयन्तं भजामहम् प्रेताशनप्रविष्टं तं सर्वाभरणं भूषितं दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वेश्वरमयं देवं हनुमाद्विश्वतो मुखं पञ्चाशच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्णं पीताम्बरादिमुकुटैरपि शोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटस्य महोत्साहं सर्वलोकविनाशनं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रियदापयं हरिम्। ॐ हरिमर्कटस्थाय
मर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा इदं कवचं पठित्यातु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपुत्रोपवर्धनं त्रिवार च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशकरं षष्ठवारं च पठे नित्यं सर्वदेववशकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकरम् अष्टवार पठे नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धि भवेद्ऋषभम् कवचं शरणेनैव महाबलं वाप्नुयात् ॐ श्री पंचमुख हनुमत कवचम् ॐ श्री पंचवदनाय आञ्जनेयाय नमः ॐ श्री गरुडुवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शिनु सर्वाङ्गसुन्दरी यत् कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनयुक्तं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाभूतम् अत्रुगतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गरुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल जररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवन्तकरं परं येन वक्त्रेण विपेन्द्र तारकाख्यं महाशूरं जघान शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परं ध्याता पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खटाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्ठौ तु कौमोदकी भिक्षं धारयन्तं कमण्डूलं भिन्दी
द्विपालं ज्ञानमुद्रं दशभ्रीमोनिपुङ्गवम् एतान्यौर्यजालानि धारयन्तं भजामहम् प्रेताशन प्रविष्टं तं शर्वाभरं भूषितं दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वेश्वरमयं देवं हनुमाद्विश्वतो मुखं पञ्चाशच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्णं पीताम्बरादिमुकुटैरपि शोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमद्यमनीशं मनसा स्मरामि मर्कटस्य महोत्साहं सर्वलोकविनाशनं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रियदापयं हरिम् ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा इदं कवचं पठित्यातु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपुत्रोपवर्धनं त्रिवार च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशकरं षष्ठवारं च पठे नित्यं सर्वदेववशकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकरम् अष्टवार पठे नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिक पठे नित्यं सर्वसिद्धि भवेद्ऋषभम् कवचं शरणेनैव महाबलं वाप्नुयात् ॐ श्री पंचमुख हनुमत कवचम् ॐ श्री पंचवदनाय आञ्जनेयाय नमः ॐ श्री गरुडुवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शिनु सर्वाङ्गसुन्दरी यत कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनयुतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाभूतम् अत्रुगतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गरुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं
उत्तरं शोकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल जररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवन्तकरं परं यनवक्त्रेण विपेन्द्र तारकाख्यं महाशूरम् जघान शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परं ध्याता पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खटाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्ठौ तु कौमोदकी भिक्षं धारयन्तं कमण्डूलं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रं दशभ्रीमुनिपुङ्गवम् एतान्यौर्यजालानि धारयन्तं भजामहम् प्रेताशनप्रविष्टं तं सर्वाभरणं भूषितं दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वेश्वरमयं देवं हनुमाद्विश्वतो मुखं पञ्चाशच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्णं पीताम्बरादिमुकुटैरपि शोभिताङ्गं पिञ्जाक्षमद्यमनीशं मनसा स्मरामि मर्कटस्य महोत्साहं सर्वलोकविनाशनं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रियदापयं हरिम् ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा इदं कवचं पठित्या तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपुत्रोपवर्धनं त्रिवार च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशकरं षष्ठवारं च पठे नित्यं सर्वदेववशकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकरम् अष्टवार पठे नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिक पठे नित्यं सर्वसिद्धि भवेद्ऋषभम् कवचं शरणेनैव महाबलं वाप्नुयात् ॐ श्री पंचमुख हनुमत कवचम् ॐ श्री पंचवदनाय आञ्जनेयाय नमः ॐ श्री गरुरुवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शिनु सर्वाङ्गसुन्दरी यत् कृतं देवदेवेन् ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनयुक्तं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्
पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अश्चैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाभूतम् अत्रुगतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गरुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं शर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल जररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवन्तकरं परं येन वक्त्रेण विपेन्द्र तारकाख्यं महाशूरं जघान शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परं ध्याता पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खटाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्ठौ तु कौमोदकी भिक्षं धारयन्तं कमण्डूलं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रं दशभ्रीमोनिपुङ्गवम् एतान्यौर्यजालानि धारयन्तं भजामहम् प्रेताशनप्रविष्टं तं सर्वाभरणं भूषितं दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वेश्वरमयं देवं हनुमाद्विश्वतो मुखं पञ्चाशच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्णं पीताम्बरादिमुकुटैरपि शोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटस्य महोत्साहं सर्वलोकविनाशनं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रियदापयं हरिम् ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा इदं कवचं पठित्या तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपुत्रोपवर्धनं त्रिवार च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशकरं षष्ठवारं च पठे नित्यं सर्वदेववशकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकरम् अष्टवार पठे नित्यं अष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिकी पठे नित्यं सर्वसिद्धि भवेद्ऋषभम् कवचं शरणेनैव महाबलं वाप्नुयात्
ॐ श्री पंचमुख हनुमत कवचम् ॐ श्री पंचवदनाय आञ्जनेयाय नमः। ॐ श्री गरुरुवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शिनु सर्वाङ्गसुन्दरी यत् कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनयुक्तं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाभूतम् अत्रुगतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गरुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल जररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवन्तकरं परं येन वक्त्रेण विपेन्द्र तारकाख्यं महाशूरं जघान शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परं ध्याता पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खटाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्ठौ तु कौमोदकी भिक्षं धारयन्तं कमण्डूलं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रं दशभ्रीमुनिपुङ्गवम् एतान्यौर्यजालानि धारयन्तं भजामहम् प्रेताशनप्रविष्टं तं सर्वाभरणं भूषितं दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वेश्वरमयं देवं हनुमाद्विश्वतो मुखं पञ्चाशच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्णं पीताम्बरादिमुकुटैरपि शोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटस्य महोत्साहं सर्वलोकविनाशनं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रियदापयं हरिम्। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा इदं कवचं पठित्यातु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपुत्रोपवर्धनं त्रिवार च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशकर
शुभकरम् षष्ठवारं च पठे नित्यं सर्वदेव वशकरम् सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकरम् अष्टवार पठे नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धि भवेद्ऋषभम् कवचं शरणेनैव महाबलं वाप्नुयात्